Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Okay. So good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to see another chapter from biochemistry, and that is nothing but the vitamins. So today we will discuss about the vitamins, and again very important chapter. So after completing the vitamins, we will discuss some important remaining part from amino acids also. But important part, whatever is important for you, GPAT Niper DI Pharmacist, that has already been covered from amino acid and protein chapter. But in addition to that also, I will find out some important, if anything is remaining, I will extract that. I will make notes. One more lecture. But before इसका कमी नहीं होना चाहिए. विटामिन इसमें ये फ्रूट खाओ, इसमें ये विटामिन है, ये खाओ, उसमें ये विटामिन है. So vitamins, why they are important? So you know that biomolecules, how many number of biomolecules are there? So carbohydrate is there, protein is there, lipids are there, right? So carbohydrate, protein, lipids, they are known as the biomolecules. They are very important for your life, but you cannot survive, or your growth will not be adequate just by using carbohydrate, proteins and lipids. For the optimum growth and for the normal growth of every individual, you need a certain additional factors. So beyond the carbohydrate, protein and lipid, तो नॉर्मली आपका डाइट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है. Carbohydrate, proteins and lipids, they are known as the biomolecules. But for adequate growth, these three biomolecules are not only important. So for the adequate growth, carbohydrate, proteins and lipids are not enough. You need a certain other compounds, and they are known as the accessory factors. And these accessory factors are nothing but the vitamins. तो आपके ग्रोथ के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड नहीं लगता, उसके साथ साथ कुछ एसेसरी फैक्टर्स लगते हैं. वो फैक्टर क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं. सो देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट वंस. in that experiment they tried to prove the growth by just using carbohydrate, protein and lipids, but there was not adequate growth. जैसे आपका कंप्लीट फूड होता है, आपका मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. इन दैट यू हैव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स आल्सो. जस्ट with the carbohydrate, protein and lipid, you cannot have adequate growth. So vitamins are required. They are initially known as the accessory factors, but later on it was discovered that in a rice, okay, so you are using rice, so you are polishing that rice. So there is one scientist known as a Flunk. So he discovered the vitamin. So vitamins, you see, there was one scientist known as a Flunk. In 1913 he isolated one active principle from the polished rice. जो पॉलिश होता है राइस का, जो राइस का छिलका होता है, मेज होता है, राइस मेज. So from that he isolated one compound. Later was this compound also found in the yeast. पहले तो राइस का जो छिलका होता है, राइस का छिलके में एक कंपाउंड आइसोलेट किया उसने, उसको बोला विटामिन. So active principle which was a amine in nature. So the Flunk in 1913 isolated one principle which is a amine in nature from the polished rice.
So from the rice polishing or the outer covering of your rice. So and later on this compound also was isolated from yeast. जो आपके ब्रेड्स बटर वो जो होते हैं उसके लिए yeast लगता है आपको. So it was also isolated from yeast. And this compound can cure the beriberi. This compound can cure the beriberi. Beriberi, it is a deficiency syndrome for the vitamin B1. Vitamin B1 का ये deficiency होता है beriberi. Okay. Then he coined the term vitamins. He coined the term vitamin. Vitamin मतलब vital amines. You can call it as vital amines because they are very important for life. So vital amines इसको बोलते हैं अपन vital amines. So vitamins or vital amines. So not only carbohydrate, protein and lipid, they are not adequate for the growth and maturation. So you need a certain accessory factors. So they are called as vitamins and vitamins. So first time the Flunk in 1930 coined the term vitamin, and so it was a okay. Now after that they divided vitamin in two group, vitamin A group and vitamin B group. A means lipid soluble vitamins and B means water soluble vitamins, and they called as a B complex vitamins. But later on there was around 9 compound in the B complex vitamin, so they have separated. Okay, so vital amines or vitamins, they are very important for life. So you can say what are the vitamins? Vitamins are the nothing but the important accessory factors, which are important accessory factors, or you can say they are the cofactors for various metabolic reactions, and they are very important for your life. So they are the vital. Most of them are amine in nature. जो विटामिन है उसमें से बहुत सारे विटामिन क्या है, they are amine in nature. That's why the term vitamin is vital amine, means amine. So they are the vital amines for the body's growth. So vitamins, right? Now vitamins are classified according to their solubility. कि विटामिन किस में soluble है? So according to the solubility, vitamins are classified. So those vitamins which are soluble in the lipids, they are known as the lipid soluble vitamins or fat soluble vitamins. जो लिपिड में soluble है उसको लिपिड soluble बोलते हैं, जो वाटर में soluble है उसको वाटर soluble बोलते हैं. So vitamins are classified into two type: water soluble vitamins and lipid soluble vitamins, depending on their solubility. But vitamins, they need in a very small quantity. So they are nothing but the organic compounds required for the growth and division in a smaller amount, and they are not digested. They require as a cofactor. That's why they are known as vital amines. Okay. So classification, they are classified based upon the solubility. So if they are soluble in the lipid, they are lipid soluble vitamins or fat soluble vitamin. पहला क्लास है आपका lipid soluble vitamins or fat soluble vitamins. In that you have vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. All they are nothing but the isoprenoid unit. They are the derivative of isoprene unit. They are the derivative of isoprenoid unit, C5H8. We have seen in the pharmacognosy. Isoprenoid unit के derivative कौन है? Lipid soluble vitamins or fat soluble vitamins. Okay. Compounds, they are made up from either one or more isoprene unit. तो इसमें एक या एक से ज़्यादा isoprene unit होगा. तो fat soluble vitamins. Remember question आता है ADE के. They are known as the lipid soluble vitamins or fat soluble vitamins, right? Fat soluble vitamins कौन से है आपके? Vitamin A, D, E, K. Or they are also known as isoprenoids. Also known as isoprenoids because they are the derivative of isoprene units. उसमें one or more isoprene units होंगे. Now water soluble vitamins. Water soluble vitamins. Second class type का water soluble vitamins. So obviously they are soluble in the water and further divided into B complex and non B complex vitamin. उसमें B complex vitamin का vitamin water soluble vitamins may be either B complex vitamin or non B complex vitamin. B complex vitamin मतलब क्या?
they are the compounds, so they are the vitamins which was isolated from a single complex vitamins. Non B complex vitamins में आता है आपको vitamin C. So initially vitamin B1 was discovered. After that B2, B3, B5, B6, likewise B12. So there was a 12 vitamins was discovered. But out of that, few vitamins are nothing but the already a mixture of previously known vitamins. So that's why some vitamins are removed. Say vitamin B1 है, B2 है ना, B6 है, बीच में का नहीं, B3 है, B4 नहीं है, B5 नहीं है, likewise that. तो क्यों नहीं है वो? Because it was named as a B1, B2, B3 up to the B12, but later on it was found that so some vitamins are the mixture of already known compound. That's why that is eliminated. So water soluble vitamins can classified into two types, that is a B complex and non B complex, and B complex are also classified into two types, energy yielding and non energy yielding B complex, right? So देखो यहाँ पे non B complex vitamin is example is a vitamin C. Non B complex कौन है? Vitamin C. Vitamin C is also known as a ascorbic acid. It is also known as a ascorbic acid, and it is a glucose. It will look like a glucose. So vitamin C is a ascorbic acid. ग्लूकोज जैसा उसका स्ट्रक्चर है. तो वाटर सोल्यूबल में आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स. नाउ बी कॉम्प्लेक्स, in the B complex vitamin, so there is a complex structure of these vitamins, that's why B complex, right? Now in that you have further two classes. First one is energy releasing vitamins. So they are responsible for the metabolism in the body. Their cofactors are responsible for the metabolism in the body and responsible for the energy releasing ATP. इसमें आता है thiamine. Thiamine is known as a B1. Vitamin B1 is a thiamine. Riboflavin is known as a vitamin B2. Niacin is known as a vitamin B3. Pyridoxine is known as a B6. Biotin is known as a B7, and pantothenic acid is a B5. Then cyanocobalamin is also there, but that is classified into another category. अब ये है ना B complex है ना vitamin are classified into and water soluble vitamins. Water soluble vitamins are also classified into two further type: non B complex vitamin C, B complex. B complex में first energy releasing vitamins like thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, biotin and pantothenic acid. Then B आता है इसमें hematopoietic vitamins. They are required for the blood formation. ये blood formation के लिए important है. जैसे आपका hemoglobin वगैरह बनता है उसके लिए important है. तो एनर्जी रिलीजिंग मतलब ये मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ऑल दिस विटामिन्स हैव कोफैक्टर्स, है ना. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर लाइक पीपीपी, है ना, थायमिन पायरोफॉस्फेट, है ना, पीएलपी, राइबोफ्लेविन, है ना, एनएडीपीएच लाइक दैट. तो these cofactors are based upon these vitamins. वो विटामिन के कोफैक्टर है. So they will give you energy releasing vitamins. Hematopoietic means they are required for the maturation of RBC. They are required for the maturation of RBC and hemoglobin. They are required for the maturation of RBC and hemoglobin. That's why they are known as a hematopoietic vitamin. इसमें आता है folic acid known as vitamin B9, then cyanocobalamin vitamin B12. Folic acid B9, cyanocobalamin vitamin B12, right? Now synthesis of vitamin, you know, now these vitamins, they are not synthesized in human. There is one bacteria known as E. coli. E. coli नाम का एक बैक्टीरिया है, E. coli. So E. coli does not require any vitamin. E. coli does not require any vitamin for growth, but E. coli can synthesize all vitamin.
E. coli itself does not require any vitamin for the living, but it can synthesize all vitamin. ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, याद रखना है. Now humans, in case of humans, so the capacity to synthesize the vitamin was lost during the evolution. जब इवॉल्व हो चुके, इवोल्यूशन के दरमियान ह्यूमंस का कैपेसिटी गायब हो गए, मतलब लॉस हो गए. That's why nowadays only human can synthesize only 2 vitamins, that is known as a vitamin D, that vitamin K and B complex, some B vitamins. Okay, so right now vitamins, synthesis of vitamin in intestinal bacteria. In the humans, few vitamins are synthesized in the intestine. ह्यूमंस में कुछ विटामिन्स इंटेस्टाइन में बनते हैं, जैसे है ना intestinal bacteria. Synthesis of vitamin by intestinal bacteria, not synthesized by human by their own, but vitamin K. Vitamins are not synthesized by their human. Vitamins are not synthesized by human by their own, but in the intestine of human there is a bacteria, so they can synthesize vitamin K and biotin. Vitamin K and biotin, they are synthesized by intestinal bacteria of human. Then again vitamin B complex is also synthesized, but up to lesser extent. मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से कुछ बी विटामिन कॉम्प्लेक्स प्लस बायोटिन प्लस विटामिन के, ये 3 विटामिन है. इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आ चुका है. विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इन ह्यूमन? आंसर वाज विटामिन के. राइट, याद रखना है क्लासिफिकेशन. राइट, नाउ दीज विटामिन्स दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, है ना, दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी. Most of them are amine in nature, that's why they are vital for cell function. That's why vitamin name is given. Right? You can see what are the vitamers. Vitamer एक term है. There is one term known as a vitamers. Vitamers क्या होता है? जैसे आपका term होता है isomers. So isomers means क्या कि isomer एक ही compound है, एक ही तरह की दिखता है, but उसमें arrangement अलग है. Right? So vitamers are also chemically similar compounds, chemically similar substances that possesses a quantitatively similar vitamin activity. मतलब एक ही है ना, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और विटामिन का एक्टिविटी भी सेम है. सो फॉर एग्जांपल विटामिन ए हैज अ 3 vitamers. Vitamin A has a 3 vitamers. First is a retinol, second is a retinal, and third one is a रेटिनोइक एसिड. तो विटामिन ए का 3 क्या है विटामर्स है. विटामिन ए हैज अ 3 विटामर्स, ये टर्म आपने सुना ही ना होगा. तो विटामिन ए हैज अ 3 विटामर्स, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड. रेटिनॉल मींस अल्कोहल फॉर्म, इसमें OH ग्रुप होता है, OH. तो रेटिनॉल मींस अल्कोहल फॉर्म, OH ग्रुप. रेटिनल मींस अल्डिहाइड ग्रुप, CHO. रेटिनॉल मतलब क्या, अल्डिहाइड ग्रुप. एंड रेटिनोइक एसिड मतलब COOH ग्रुप, है ना, COOH. So there are 3 vitamers of vitamin A. Likewise that vitamin B6 pyridoxine, उसका भी विटामर्स है, pyridoxine, pyridoxamine and pyridoxal, है ना. Likewise that, so they are the vitamers of vitamin A. So retinol, retinal, retinoic acid, they are the vitamins of vitamin A. Now likewise that pyridoxine, pyridoxine में है ना विटामिन B6, इसको बोलते हैं B6. इसका है pyridoxal, है ना, pyridoxamine, they are the vitamins of vitamin B. Now classification of vitamins. So vitamins, they are classified based upon their solubility. So those vitamins which are soluble in the lipid and they are absorbed, you know, from the lymph. तो फैट सोल्यूबल विटामिन, उसमें आता है विटामिन ए. उसके 3 विटामिन है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड. फिर विटामिन डी, इसका है कोलिकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल. विटामिन ई इज अ टोकोफेरॉल. विटामिन के इज अ फाइलोक्विनोन. विटामिन ए इज आल्सो नोन एज एंटी जीरोथैल्मिक फैक्टर एंड एंटी जीरोथैल्मिक फैक्टर. तो उनका अगर विटामिन अगर नहीं मिलेंगे तो डेफिशिएंसी होगा एंड सम सिम्टम्स आर देयर. तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी
विटामिन ए का डिफिशियंसी जीरोथैल्मिया, विटामिन डी का डिफिशियंसी होता है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेसिया, विटामिन ई का होता है ना इम्पोर्टेंस, विटामिन के का होता है ना, तो विटामिन के कोएगुलेंट होता है. दीज आर द विटामिन known as lipid soluble vitamins or fat soluble vitamin. Vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin E. Now water soluble vitamins, water soluble vitamins इसमें दो आता है, B complex and non B complex. Non B complex में आता है विटामिन C which is known as ascorbic acid. B complex में आता है दो टाइप, B complex में क्या है दो, B complex में फर्स्ट एनर्जी रिलीजिंग और एनर्जी यील्डिंग, सेकंड आता है हिमेटोपोएटिक विटामिन. एनर्जी यील्डिंग कौन है, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 नियासिन, बायोटिन इज B7 एंड लिपोइक एसिड. हिमेटोपोएटिक में दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड आरबीसी फॉर्मेशन. तो फॉलिक एसिड इज देयर एंड साइनोकोबालामिन इज देयर. फॉलिक एसिड को है विटामिन B9, साइनोकोबालामिन में क्या है विटामिन B12 एंड थर्ड आता है ऑदर में आता है पायरिडोक्सिन. नाउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज द टर्म रफली यूज फॉर बी कॉम्प्लेक्स है ना, बी कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं अपन, बी कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12. तो विटामिन B1, B6, B12 इन तीनों को बोलते हैं विटामिन ई कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, राइट. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. तो नेक्स्ट विल सी बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स. पहले लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स देखेंगे. तो फर्स्ट विल सी द विटामिन ए, फर्स्ट विल सी द विटामिन ए. विटामिन ए इज नोन एज अ रेटिनॉल, रेटिनॉल which is a alcohol form. रेटिनॉल क्या है, अल्कोहल फॉर्म. इट इज अ लिपिड सोल्यूबल विटामिन, अल्कोहल फॉर्म. और इसकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. व्हाट इज दैट, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग बीटा आयोनोन रिंग. जिसमें क्या होता है बीटा आयोनोन रिंग. देयर आर 2 आइसोप्रिनाइड यूनिट, साइड चेन में है 2 आइसोप्रिनाइड यूनिट्स. तो बीटा आयोनोन रिंग प्लस 2 आइसोप्रिनाइड यूनिट्स प्लस 4 डबल बॉन्ड्स and 1 hydroxyl group. This is the chemistry of vitamin A. विटामिन ए के स्ट्रक्चर में क्या है, इट इज अ रेटिनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है कंटेनिंग बीटा आयोनोन रिंग विद 2 आइसोप्रिनाइड यूनिट एंड 4 डबल बॉन्ड्स 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दैट इज अ विटामिन ए, है ना. विटामिन ए का रेट है ना, उसका विटामस होता है विटामिन ए का रेटिनॉल, रेटिनॉल है ना, रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनाइक एसिड. रेटिनॉल मतलब अल्कोहल फॉर्म, रेटिनॉल मतलब अल्डेट फॉर्म, रेटिनोइक एसिड मतलब एसिड फॉर्म. आउट ऑफ दैट जो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल अल्कोहल फॉर्म, दैट इज एक्टिव. ओके, नाउ these are required for normal growth and differentiation of cell also. Okay, now recommended daily allowance कितना लगता है डेली. तो recommended daily allowance मतलब डेली आपको विटामिन ए कितना लगता है. तो it is required as 1000 retinol units or 3500 international units or 800 to 500 international unit or men and women respectively. मतलब for men 1000 retinol units are required and for female 800 retinol units are required for daily. Recommended daily allowances. Okay, daily allowance. Now what is the source of this vitamin A? So vitamin A is not found in the veg food. These are found in the non-veg food. Non-veg. So it is mostly found in the liver. ये ना 200 BC. 200 BC. BC मतलब before Christ. So there was a scientist Hippocrates. So Hippocrates, he cured the night blindness. He cured the night blindness. Hippocrates ने क्या किया, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके पास एक बच्चा था उसको नाइट ब्लाइंडनेस था. तो हिप्पोक्रेट्स हैज गिवन लिवर एक्सट्रैक्ट. लिवर
एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑक्स, जो ऑक्स होता है, बैल होता है ऑक्स, उसका लीवर एक्सट्रैक्ट है ना, लीवर एक्सट्रैक्ट इन द ऑयल, liver extract in the oil is given to that patient who was suffering from night blindness and he was cured, you know. So actually the vitamin A was discovered before 2200 BC, मतलब before Christ. So base source for vitamin A, you know, vitamin A as such, retinol is found in the only animal source, but its pro vitamin A is found in the वेजिटेबल सोर्स. बेस सोर्स क्या होता है? लिवर, किडनी, एग यॉल्क, मिल्क, चीज, बटर, फिश लिवर ऑयल. देन बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन इज नोन एज अ प्रो विटामिन ए. इट इज नोन एज अ प्रो विटामिन ए. बीटा कैरोटीन जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्रो विटामिन ए. और प्रो विटामिन ए के नाम के ऊपर आपको बहुत लोग उल्लू बना रहे हैं. कैसे? कोई भी शैम्पू ले लो आप, कोई भी क्रीम ले लो, उसमें क्या बोलेंगे आपको? इसमें है प्रो विटामिन ए, है ना, प्रो विटामिन ए के तत्व, प्रो विटामिन ए के गुण. बट एक्चुअली प्रो विटामिन ए मीन्स व्हाट? बीटा कैरोटीन. प्रो विटामिन ए मीन्स बीटा कैरोटीन, so known as a pro vitamin A. Found in the carrot, found in the beet, है ना, in the capsicum also. तो प्रो विटामिन ए, इसको बोलते हैं प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन. अब प्रो विटामिन ए क्या है कि इट विल बी ब्रोकन डाउन एंड इट विल गिव यू 2 molecules of vitamin A. 2 molecules of vitamin A. So pro vitamin A after breakdown will give you 2 molecules of vitamin A. But the breakdown in the humans है ना is very less extent up to the, मतलब इसका बहुत ही small, मतलब the required amount is not fulfilled from this. So okay, the cleavage of beta carotene is very less extent. It is very less extent in the humans. So कुछ amount मिलता है but है ना, सब नहीं मिलता. So rich source of vitamin A is nothing but the animal source, that is the liver, kidney, egg yolk, milk, cheese, butter, fish liver oil. But beta carotene is a pro vitamin A that is from vegetable source. Now the structure of vitamin A, you can see this is the retinol. This is the retinol, retinoic acid. It is a retinol. ये क्या है? retinol. Retinol मतलब alcohol form. You can see over here alcohol form. This is known as a beta iodine. ये क्या है? beta iodine. तो बीटा आयोनाइडिंग, इसके बाद में 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट्स, 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट्स C5H8, 2 आइसोप्रेनाइड यूनिट्स C5H8. Now its aldehyde derivative is known as a retinol and COOH derivative, मतलब acid derivative is known as retinoic acid. Retinol, retinoic acid, retinoic acid. They are known as the vitamins of each other. ठीक है. Now vitamin A is very very important for your vision. Vision के लिए सबसे ज़्यादा important है. And rhodopsin cycle is there, known as the Wald's visual cycle. So George Wald in 1930 was demonstrated the effect of this vitamin A in the विजन के रिगार्डिंग विटामिन ए का रोल क्या है वो जॉर्ज वर्ल्ड ने बोला था, एंड दैट इज नोन एज वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल. वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल, ठीक है. मतलब क्या है? सो इसका एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है विटामिन ए का? सबसे पहले विटामिन ए इज फाउंड एज अ रेटिनॉल ईस्टर्स. So that is absorbed from the, that is broken down into the GIT and it is absorbed from the lymph and that is transported to a liver and stored in the fat. So fat soluble vitamin जो है they can be stored in the body. So that's why their deficiency normally does not occurs. उनका deficiency जल्दी होता नहीं है because they have storage form in the body, and that's why as they have storage form their toxicity also can occur.
अगर ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो टॉक्सिटी भी होता है. दैट्स वाई विटामिन बी vitamin known as a fat soluble vitamins, they have storage form and that's why they can develop into toxicity. They are absorbed as a retinal esters, they are transported to a liver and then storage form. Now your eyes has a two type of cell. आपका जो eyes है, eyes में there are two type of cell. First is nothing but the rod cell. The eyes has a two type of cell, one is a rod cell and second one is a cone cell. Rod cells are present in the periphery. Rod cell कहाँ पे होता है? Periphery में होता है. Rod cells are present in the periphery of your eye. मतलब आपको जो eyeball है उसमें है ना, आपको जो retina है, in the retina you have rod cells in the periphery and cone cells in the center. You have cone cells in the center. So rod cells are responsible for the dim light. याद रखना है आपको, rod cells are responsible for the dim light vision. तो जो dim light vision है that is because of the rod cells, and cone cells are responsible for the bright light vision and color vision. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Cone cells are responsible for the bright light and color vision. Rod cells are responsible for the dim vision. Right? Now ये कैसे होता है? Now vision कैसे होता है? It was described by George Wald in 1930 and that is known as the Wald's visual cycle. Wald's visual cycle. Now अब है ना, तो ये जो vitamins है they are absorbed from intestine as a retinal esters and they are transported to a liver known as a with the help of some protein known as a retinal binding protein. ना उसका प्रोटीन होता है retinal binding protein. They are absorbed है ना, and ये एक्ट कैसे होते हैं पर्टिकुलर सेल के ऊपर. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है इनका? तो दे एक्ट लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन. ओके, दे एक्ट लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन. They have the receptor in the cell, so the binding protein will transport them into the cell and cellular binding protein is also there. So ये vitamins cellular binding protein के साथ में they will reach to the nucleus, they will go into the chromatin and they will exert their effect, right? So they act as a steroid hormone, they acts like a steroid hormone, right? ये absorption distribution metabolism मैंने बोल दिया. अभी as I told you, rod cells are responsible for the dim light in the retina, cone cells are responsible for the bright light and color vision. Now Wald's visual cycle, right? When there is a light photon, your retina picks up one protein known as rhodopsin. रेटिना में आपके एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन. रोडोप्सिन हैज अ 11 सिस रेटिनल. रोडोप्सिन मतलब क्या? रोडोप्सिन में क्या है कि 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन होता है. ऑप्सिन ये प्रोटीन है प्लस 11 सिस रेटिनल मतलब विटामिन ए का एक्टिविटी, राइट? नाउ व्हेन लाइट विल फॉल ऑन योर आई, जब लाइट आपके आईज के ऊपर गिरता है, so this rhodopsin is broken down. This rhodopsin is converted into, it is a broken down. Now opsin will be released and this 11 cis retinal is converted into 11 trans retinal. 11 trans retinal and there is a generation of nerve impulse. Okay. Now 11 trans retinal, so इसमें का तकरीबन 10 to 20% 11 trans retinal is immediately converted into 11 cis retinal by the retinal isomerase. मतलब रेटिना में ही आपका retinal isomerase होता है, that will convert into 11 cis retinal and that will be circulated again. Okay, but 80% of this 11 trans retinal will be transported into the liver. So in the liver this 11 trans retinal is converted into all trans retinol by alcohol dehydrogenase. Then all trans retinol is converted into 11 cis retinol in the liver. Again 11 cis retinol is converted into 11 cis retinal. नाल मतलब aldehyde, नाल मतलब alcohol. Then 11 cis retinal will be available in the rhodopsin. This is known as a Wald's visual cycle. तो Wald's visual cycle में क्या होता है कि आपके आईज का जो रेटिना है उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं ना, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स.
Rod cells is responsible for the dim light. Cone cell is responsible for the bright light and color vision. Okay. Now your eyes retina, eyes में क्या है retina है. So in the retina you have rhodopsin, one protein. So one protein known as rhodopsin. So it has a 11 cis retinal and then protein is opsin. ये दो से बनता है 11 cis retinal and opsin known as rhodopsin. When light will fall on the retina, so this is broken down. Rhodopsin is broken down and opsin protein is released and 11 cis retinal is released, right? Separated. And you will get a nerve impulse brain को. 11 cis retinal is converted into 11 and 11 trans retinal is converted into, sorry, when light is fallen on your retina, so this rhodopsin is broken down and opsin is released and this 11 cis retinal is converted into 11 trans retinal. तो 11 ट्रांस रेटिनल का इमीडिएटली आइसोमराइजेशन होता है 11 cis retinal में, बट अप टू 10% या 20%. रिमेनिंग जो 90% 80% बचा है वो लिवर में जाएगा. लिवर में 11 ट्रांस रेटिनल का 11 ट्रांस रेटिनॉल बनेगा बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज. उसके बाद में उसका आइसोमराइजेशन होके 11 cis retinol बनेगा, रेटिनॉल बनेगा और उसका फिर से क्या होगा, alcohol dehydrogenase will convert into 11 cis retinol and this is again circulated to, this will complete the rhodopsin cycle. मतलब during each event of light, जब लाइट फॉल होता है आपके रेटिना के ऊपर क्या होता है, ये होता है ना. Now you can see 11 trans retinal structure. 11 trans retinal का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 11 cis retinal का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. So you can see over here this 11 trans and 11 cis retinal. Now how there is absorption, as I told you, vitamin A they are absorbed as a retinal esters. Retinol esters they are absorbed in the intestine and they are transported to your lymphatic system जहाँ से आपका lipids and वो soluble lipids and fat absorb होता है. They are absorbed as a chyme and they are transported to a liver for a storage. ना liver में storage के लिए भेज देते हैं. And from the liver retinol is released as a retinol and in the blood retinol binding protein is there, so it will bind to a protein, then it will go at a target cell ना, उसमें retinol esters retinol ना, उसके बाद में फिर से सेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसको बाइंड करके डीएनए और क्रोमैटिन के पास जाता है, राइट. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ रेटिनॉल. सो बीटा कैरोटीन क्या है, इट इज अ बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए. रिमेंबर क्वेश्चन आ चुका है. बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए. इट इज फाउंड इन द प्लांट एंड व्हेन देयर इज अ हाइड्रोलिसिस और व्हेन देयर इज अ breakdown of this beta carotene, you will get a 2 molecules of vitamin A. So beta carotene is hydrolyzed by beta carotene dioxygenase. Beta carotene dioxygenase. They will give you 2 molecules of vitamin A. But this hydrolysis is very less in the humans. आपके humans में बहुत ही कम होता है ये. So that's why. तो याद रखना है pro vitamin A is nothing but the beta carotene. आपको शैम्पू में इसमें प्रो विटामिन डाल के आपको उल्लू बना देंगे, बिकॉज योर हेयर योर स्किन डज नॉट हैव एनी एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन द प्रो विटामिन ए इनटू द विटामिन ए, है ना. तो अगर आपके शैम्पू में प्रो विटामिन ए है तो आपके बालों में या फिर आपके स्काल के ऊपर ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो प्रो विटामिन ए को ब्रेक डाउन करे, तो उसका यूज क्या है, मतलब फालतू में आपके पैसे वेस्ट कर रहे हैं. सो 1 molecule ऑफ बीटा कैरोटीन विल गिव यू 2 molecules ऑफ विटामिन ए. रिमेंबर इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. नाउ रेटिनॉल इज अल्कोहल फॉर्म, रेटिनॉल इज अल्डेहाइड फॉर्म, रेटिनोइक एसिड इज अ एसिड फॉर्म एंड ऑल दे आर नोन एज विटामिन्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए हैज अ बायोलॉजिकल रोल इन अ विजन which is illustrated by Wald's विजुअल साइकिल और रोडोप्सिन साइकिल, क्योंकि ये जॉर्ज वाल्ड ने 1913 में डिस्कवर किया था.
George Walt was discovered this, and that's one known as a Waltz visual cycle, also known as the rhodopsin cycle. रेटिना हैज अ टू टाइप ऑफ सेल. रेटिना में क्या है कि दो टाइप ऑफ सेल रहता है. योर रेटिना हैज अ टू टाइप ऑफ सेल. रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीम लाइट विजन एंड कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट विजन एंड कलर विजन. इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. तो remember, rod cells are responsible for the dim light, cone cells are responsible for the color vision and bright light. Now functions of vitamin A. So almost it will almost like a steroid hormone. So it will act as a steroid hormone. It is a very important for synthesis of protein. It is also involved in the growth and differentiation of cell. Important for normal reproduction in humans. Cholesterol synthesis के लिए लगता है. It is important for proper immune system. Carotenoids, they will act as antioxidant in a human body. Now deficiency disorders and overdoses of vitamin A. मतलब जो भी लिपिड सोल्यूबल विटामिन ए उनका टॉक्सिसिटी हो सकता है. लिपिड सोल्यूबल विटामिन ए का विटामिन जो है जितने भी ए डी ई के उनका टॉक्सिसिटी हो सकता है बिकॉज दे हैव स्टोरेज फॉर्म है ना, एंड दे आर लिपिड सोल्यूबल. दे आर नॉट इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है, बी कॉम्प्लेक्स. They are known as water soluble vitamins. They are, as they are soluble in the water, they are easily excreted. Deficiency disorder and overdose of vitamin A. So night blindness is a deficiency disorder. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. So deficiency syndrome of vitamin A is a night blindness. Means night में ही नहीं दिखता, दिन में दिखता है. Difficulty to see in the dim light. And there is increased डार्क एडेप्टेशन टाइम. इंक्रीज्ड डार्क एडेप्टेशन टाइम मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक जन है, आप ये आप हो, ये कौन हो, ये आप हो, ये है आपकी फ्रेंड, ये है आपकी फ्रेंड ना, और आप आपके फ्रेंड को लेके गए वहां पे सिनेमा देखने ना, थिएटर में गए. थिएटर में यहाँ पे है थिएटर, यहाँ पे फिल्म लगा है कौन सा, पुष्पा 2. यहाँ पे फिल्म लगा है पुष्पा 2 है ना. जैसे आप अपने फ्रेंड को लेके थिएटर में एंटर होते हो, क्या होगा, एज यू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम ब्राइट लाइट टू द डिम लाइट, तो है ना, तो उसमें क्या होता है कि सर्टन सेकंड्स फॉर अ पर्टिकुलर सेकंड्स यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. जैसे डिम लाइट होता है ना, थिएटर में डिम लाइट होता है, बाहर तो ब्राइट लाइट है. जब ऐसे ही ब्राइट लाइट से आप थिएटर में एंटर करते हो तो आपका आईज नीड्स सम टाइम है ना. जब आप ब्राइट लाइट से आप डिम लाइट में जाते हो तो आपको कुछ सेकंड का ब्लाइंडनेस आता है ना. क्यों? क्योंकि योर आईज नीड टू एडजस्ट फ्रॉम ब्राइट लाइट टू द डिम लाइट. सो दैट विल टेक अ सेकंड्स. That will take a few seconds, known as the adaptation time. So in case of vitamin A deficiency, the dark adaptation time is increased. Okay. Now next, xerophthalmia. Xerophthalmia means what? Xerophthalmia means total absence of light and total absence of sight. Xerophthalmia result in the severe deficiency of vitamin A, dryness and constructive cornea, keratinization of cells of cornea, and there is development of white triangular spot in the eyes known as a Bitot spot. Xerophthalmia मतलब क्या, पूरा ब्लाइंडनेस. Xerophthalmia, जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब शून्य होता है, जीरो मतलब जीरो होता है ना. Ophthalmia, zero ophthalmia. Xerophthalmia means total loss of vision. Severe deficiency of vitamin A leads to xerophthalmia or total absence of vision. Now again, deficiency leads to growth retardation. Growth नहीं होगा आपका. Sterility in the male. Male will be sterile, is not able to reproduce. Male will be sterile. Keratinization of epithelial cells of GIT, urinary tract and respiratory tract. तो epithelial cell जो है GIT के, urinary tract के, आपका है ना, respiratory tract के
उसमें केराटिन डिपॉजिट होगा, केराटिनाइजेशन। हाइपर विटामिनोसिस ए, जब ज़्यादा डोज हो गए तो क्या होगा? तो हाइपर विटामिनोसिस ए इज often observed in the elderly people. They are more susceptible for vitamin A toxicity. So now next is a vitamin D. Next is a vitamin D. Vitamin D is known as a argocalciferol or polycalciferol. Vitamin D polycalciferol है ना, argocalciferol. Vitamin D is known as anti है ना, and it is known as sunshine vitamin. इसको बोलते हैं अपन sunshine vitamin है ना, sunshine vitamin. विटामिन डी सनशाइन विटामिन. अर्गोकैल्सिफेरॉल, इसका तो टाइप होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल नोन एज विटामिन D2 है ना, एंड दूसरा होता है कोलेकैल्सिफेरॉल नोन एज विटामिन D3. अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 has additional methyl group and double bond then D3. D3 means cholecalciferol. They are referred as a provitamins because ये क्या है, it is not an active form. Active form of vitamin D is nothing but the calcitriol है ना, calcitriol. Vitamin D is synthesized in the skin upon exposure to the sunlight. That's why known as a sunshine vitamin. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. विटामिन डी is also known as sunshine vitamin. क्यों? Because vitamin D is synthesized under the skin upon the sunlight है ना. जैसे अर्गोस्टेरॉल और नोन एज अ प्लांट स्टेरॉल. प्लांट स्टेरॉल जब आप लेते हो ना, वो मतलब जो खाना खाते हो उससे प्लांट स्टेरॉल में. बट दिस अर्गोस्टेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 in the skin, below the skin upon exposure to the sunlight. अर्गोस्टेरॉल से बनेगा आपका अर्गोकैल्सिफेरॉल. अर्गोस्टेरॉल नहीं है तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल दैट इज आल्सो यूटिलाइज्ड. कोलेस्ट्रॉल से बनेगा अर्गोस्टेरॉल, बाद में बनेगा आपका अर्गोकैल्सिफेरॉल. स्ट्रक्चर ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल. नाउ यू कैन सी, सो 7-dehydrocholesterol. आपके बॉडी में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है. 7-dehydrocholesterol है ना, अंडर द UV rays in the skin, so photolysis will be there. 7-dehydrocholesterol is converted into secosterol, cis-secosterol, then converted into cholecalciferol, trans-cholecalciferol, विटामिन D3. ये विटामिन D3 आपका. That's why known as a sunshine vitamin. Vitamin D is known as a sunshine vitamin. Very very important for absorption of calcium. और absorption distribution metabolism कैसे होता है? cholecalciferol known as vitamin T2, known as vitamin D3, cholecalciferol. Okay, so cholecalciferol is absorbed from the है ना, जो बनेगा वो ब्लड में जाएगा, and from blood it is transferred to a liver. In the liver, 25-hydroxylase, there is an enzyme known as 25-hydroxylase which will cause hydroxylation at the 25 position. Now this is known as 25-hydroxycholecalciferol. This is known as 25-hydroxycholecalciferol. Now this 25-hydroxycholecalciferol is converted into 1,25-dihydroxycholecalciferol. मतलब यहाँ पे OH ग्रुप ऐड किया जाता है, यहाँ पे भी, राइट. सो 1,25-dihydroxycholecalciferol also known as calcitriol. Remember, this is the active form of vitamin D. विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कौन सा है? calcitriol, and that is synthesized in the kidney. That is synthesized in the kidney by alpha hydrocyclase. In the kidney, you have enzyme known as 1-alpha hydrocyclase that will convert 25-hydroxycholecalciferol means calcitriol to the calcitriol. Calcitriol is the active form. तो क्वेश्चन आ चुका है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है ना. आपको बोलेंगे अर्गोस्टेरॉल, ऑप्शन में बोलेंगे कोलेकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन में बोलेंगे
25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन डी में बोलेंगे 1,25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल. So 1,25 dihydroxycholecalciferol is known as a calcitriol and that is the active form of vitamin D. Active form है vitamin D का, याद रखना है आपको. Now important points and biological role of vitamin D. So vitamin D1, D2 they are not active as such. So vitamin D2 है ergocalciferol and D3 जो है cholecalciferol, they are not active as such. They should be converted into active form in the liver and kidney. तो cholecalciferol जो है, cholecalciferol is hydrolyzed at the 25th position first to form a 25 hydroxycholecalciferol, also known as a calcitriol, that occurs in the liver. ना कौन सा एंजाइम है? एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज in the liver. Now when passing through the kidney has a 25 hydroxycholecalciferol 1 hydroxylase. ये एंजाइम क्या करता है? Which will hydrolyze again to form a 24-25 dihydroxycholecalciferol, also known as a calcitriol, which is a biologically active form of vitamin D, which is produced in the kidney. इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. is also known as a calcitropic hormone. Vitamin D is also known as a calcitropic hormone, also known as sunshine vitamin, है ना, also known as a, है ना, also known as a anti-rickettsic factor. Now functions of this vitamin D: regulation of plasma calcium and plasma phosphate level. For the absorption of calcium is very important. ये जो vitamin D है required for the absorption of calcium and phosphate, increases the intestinal absorption of calcium phosphate. Calcitriol is essential for bone formation, for जो bone formation है. Decreases the excretion of calcium and phosphate through kidney. Very very important to regulate the calcium and phosphate ions in the body. So vitamin D, now deficiency अगर होता है ना तो obviously calcium नहीं आएगा आप हड्डी में. 24,25 dihydroxycholecalciferol known as the active form of vitamin D, known as calcitriol. Actinomycin D जो है एंटीबायोटिक है that inhibit the actions of calcitriol. Deficiency results in the deficiency क्यों होता है? Due to insufficient exposure to sunlight. अगर आपने sunlight में expose नहीं किया खुद को, that will cause deficiency of vitamin D. That result in the rickets in the children, yeah, and osteomalacia in the adult. इसी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Vitamin D deficiency in the children causes rickets, and in the adult it causes osteomalacia. Remember, renal rickets known as renal osteodystrophy due to the decreased synthesis of calcitriol in the kidney. Renal rickets मतलब क्या? Due to decreased synthesis of calcitriol in the kidney, calcitriol कम होता है तो osteodystrophy होता है, renal osteodystrophy. Amongst all vitamin D is the most toxic. याद रखना है. Vitamin D is the most toxic and overdose can leads to hypervitaminosis D. ये सबसे टॉक्सिक होता है विटामिन डी. Now next is a vitamin E. Vitamin E होता है. Next is a vitamin E. Vitamin E is nothing but the also known as a anti-sterility factor. Vitamin E को क्या बोलते हैं अपन? Anti-sterility factor. याद रखना है. Vitamin E anti-sterility factor also known as tocopherols. So vitamin E is a group of 8 similar like compound, 8 vitamins. So it is also known as anti-sterility vitamin and also known as vitamin in search of disease. मतलब अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी हो गया बहुत सारे डिसीज होते हैं. दैट्स व्हाई विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज. विटामिन ए इज एंटीऑक्सीडेंट, आल्सो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी होता है ना, एंटी अटैक्सिया विटामिन भी होता है ना. विटामिन ई विटामर्स इसमें आता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना. अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, डेल्टा टोकोफेरॉल. अल्फा टोकोफेरॉल इज द मोस्ट एक्टिव. याद रखना है, अल्फा टोकोफेरॉल इज द मोस्ट एक्टिव. अल्फा टोकोफेरॉल इज एक्टिव.
दे आर द डेरिवेटिव ऑफ, इसमें कौन सा रिंग है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टोकॉल रिंग. टोकॉल रिंग क्या होता है, 6 हाइड्रोक्सीक्रोमन रिंग नोन एज अ टोकॉल, एंड दे हैव 3 आइसोप्रेनाइड यूनिट एज अ साइड चेन. साइड चेन में 3 आइसोप्रेनाइड यूनिट होगा इसके. रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, 8 to 10 मिलीग्राम और 15 इंटरनेशनल यूनिट डेली. ये क्या है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ई. ठीक है, विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज. सोर्स क्या है इसका, इट इज फाउंड इन द व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, also found in the cottonseed oil, peanut oil, cornflower oil, corn oil, sunflower oil, and also present in the meat, milk, butter and eggs. लिवर में भी होता है. तो विटामिन ई का स्ट्रक्चर ये है, विटामिन ई. इट इज नोन एज टोकॉल रिंग, इट इज नोन एज टोकॉल रिंग. रिंग ये टोकॉल रिंग, उसके बाद में ये आइसोप्रेनाइड यूनिट्स. Important points and biological role of this vitamin E. तो विटामिन ई क्या है, इट इज एंटीऑक्सीडेंट. इट इज एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द क्रोमन रिंग. मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इज बिकॉज ऑफ द इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंड है ना, इट प्रिवेंट्स द एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है. फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया तो फ्री रेडिकल बनता है, and free radical will cause cancer, so it is also anti-cancer vitamin. Selenium is a iron, selenium is a compound, selenium is a metal which helps the vitamin E in this perspective. काम के लिए विटामिन ई के ये जो काम है एंटीऑक्सीडेंट, उसके लिए सेलेनियम हेल्प करता है. विटामिन ई प्रोटेक्ट्स द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इट इज एसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी. विटामिन ए किसके लिए, आपका सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. टू, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द सेल. इट इज रिगार्डेड एज अ मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट, सेल मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट. इट प्रोटेक्ट द आरबीसी फ्रॉम हीमोलाइसिस. आरबीसी में हीमोलाइसिस नहीं होने देगा. ऑल्सो प्रिवेंट द स्टेरिलिटी एंड इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन थ्रू ईटीसी. Now, vitamin E is required for the proper storage of creatinine. Creatinine का storage है ना मसल में. Important for the absorption of amino acids from intestine, prevention of chronic disease can like cancer and other heart diseases, and production of liver. है ना important है. Deficiency and disorders of this deficiency result in the instability, tremors, changes in the muscle, megaloblastic anemia, changes in the central nervous system, मतलब ataxia. It is also known as anti-ataxia vitamin. Anti-ataxia vitamin, anti-aging factor, anti-sterility factor. It is the least toxic vitamins among the all fat soluble vitamins. Next आता है विटामिन के. विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इज हैज 3 फॉर्म्स. उसको पहला है K1, उसको बोलते हैं अपन फाइलोक्विनोन, प्रेजेंट इन द प्लांट. प्लांट होता है. K2 मेनाक्विनोन, प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया फाउंड इन द एनिमल्स. K3 जो है उसको मेनाडाइन बोलते हैं, वो है सिंथेटिक फॉर्म. और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, विच विटामिन के फॉर्म इज अ सिंथेटिक. मेनाडाइन इज अ सिंथेटिक, है ना, मेनाडाइन इज अ सिंथेटिक. विटामिन के क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन, फ्यूजन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. इंपॉर्टेंट है, नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव क्वेश्चन आ चुका है. नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव विद आइसोप्रेनाइड साइड चेन इन अ K1 एंड K2. K3 में आइसोप्रेनाइड चेन नहीं होता है. ऑल आर हीट स्टेबल. इट इज फाउंड इन द गुड सोर्स इन द कैबेज, कॉलीफ्लावर, tomatoes, alfalfa grass, spinach, and other green vegetable. Meat, liver, cheese, dairy products, they are also good source of vitamin K. Recommended daily allowance is 70 to 150 microgram per day, and this is the structure of vitamin K. ये अगर 2 बेंजीन रिंग होता है तो उसको बोलते हैं नेप्थलीन, और उसके ऊपर 2 कीटोन होते हैं नेप्थेकिनोन, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन रिंग, नेप्थोक्विनोन रिंग, and here is a
your isopycnide units. So vitamin K cycle. Very important. Vitamin K is very important because it activates the blood clotting factors, है ना. देखो विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन, ये आपको विटामिन के. विटामिन के इज ऑक्सीडाइज्ड बाय विटामिन के इपॉक्सीडेज एंजाइम. विटामिन के इपॉक्सीडेज एंजाइम, you get the epoxide form of vitamin K. Now during this oxidation, जो blood clotting factors है, so blood clotting factors are a protein and they have glutamic acid residue. So there is a gamma carboxylation of glutamate residue and there is activation of blood clotting factors. Now vitamin K epoxide is again reduced, epoxide reductase. Vitamin K epoxide reductase, reduce it to form a oxidized vitamin K, then again vitamin K reductase will convert into reduced vitamin K. So this oxidation reaction is coupled with the activation of blood clotting factors. ये already अपने देखा है. Important points and biological role. And this is very important for blood clotting process. Blood clotting process very important है. It causes the post translational modification in the blood clotting factors like factor number 2, 5, 9 and 10. इस फैक्टर नंबर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, 7 होता है आपका लेबाइल फैक्टर, 9 होता है आपका क्रिसमस फैक्टर, 10 होता है आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर. राइट, these factors they are activated because of the vitamin K oxidation. तो विटामिन K डिपेंडेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. It acts as a coenzyme for carboxylation of glutamic acid residue in the protein known as a blood clotting factor. Formation of gamma carboxyglutamate is inhibited by dicomerol. Dicomerol क्या है? It is anticoagulant. Dicomerol is the anticoagulant found in the spoiled sweet clover grass, है ना. Coumarin derivative मैंने ऑलरेडी बताया मैंने आपको when we were discussing about the anticoagulant. Vitamin is synthesized in intestine. This vitamin is synthesized in the intestine by bacteria. In the intestinal wall by the bacteria. इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके. Deficiency disorders and overdose. देखो deficiency rarely occurs for this vitamin as sufficient amount of vitamin is synthesized in the intestine. But if there is deficiency, leads to lack of active prothrombin in the circulation. मतलब prothrombin मतलब factor 2. Increase the blood clotting time होता है due to deficiency. Increase the blood clotting time and bleeding time is hypervitaminosis of K result in the hemolytic anemia, jaundice in the infants. Toxic effects are due to the breakdown of RBC. अगर ज़्यादा डोज हो गए तो hypervitaminosis की. So antagonist of vitamin K is nothing but the heparin, bis-hydroxycoumarin, salicylate, dicomerol are the antagonists of vitamin K. Warfarin क्या है? Anticoagulant. ये synthetic analog of which inhibit the vitamin K action. So that's why warfarin के poisoning में क्या है? If there is a toxicity of warfarin, antidote is vitamin K. This was regarding the fat soluble vitamins. So tomorrow we'll see the water soluble vitamins. ये तो हो गया lipid soluble vitamins and tomorrow we'll see the water soluble vitamins, है ना. ज्वाइन ही नहीं कर रहे बच्चे तो क्या करेंगे, 2 बच्चे हैं अभी से. See you tomorrow.